है कोई ख्वाब या खुशी जो साथ है अब मेरे, बोलूं ये कैसे। तेरा ही था तेरा ही है जो पास है सब मेरे, बोलूं ये कैसे। बातें होठों पे ठहर सी गई, बातें राहों में बिखर सी गई। तू दिल की बात जान ले, ये बोल दे तुम मेरे, बोलो ये कैसे। ये पिक्चर शुरू हुई थी जब मेरी बेताब फिल्म रिलीज़ हुई थी और मैं अपनी फिल्म का सक्सेस क्या वो भी नहीं देख पाया। मेरे को स्ट्रेट अवे ये लोग रशिया ले गए थे, है ना। उसी वक्त हम लोग भागे थे वहाँ पर एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। उस वक्त की क्या बातें बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों ने देखी है पिक्चर, बहुत ही प्यारी थी और उसके गाने तो बहुत ही प्यारे थे। अनु ने म्यूज़िक दिया था, बहुत ही प्यारे गाने थे। आज तक आई एम श्योर एवरीबडी इज़ हमिंग देम एंड लिसनिंग टू देम दो सॉन्ग्स एंड आई थिंक आई विल नीड लिटिल हेल्प फ्रॉम यू। इन्होंने आफ्टर हिज फादर वो ही मैन की इमेज स्क्रीन पे लेके आए एंड आई थिंक सोनी महिवाल उनकी एक रोमांटिक टाइप की इमेज में आए थे वो। एंड जैसा आपको याद करा दूं, मैंने कुछ और भी फिल्में की थी उनके साथ, समुंदर, सवेरे वाली गाड़ी और वो सब। बट सोनी महिवाल एक इमॉर्टल लव स्टोरी है वैसे भी, क्योंकि इट्स अ क्लासिक। ऊपर से इट वाज सो ब्यूटिफुली शॉट एंड सनी एंड मी, इफ आई मे से सो, वी सूटेड द रोल्स रियली वेल। एंड आई थिंक जहाँ हम जाते हैं अभी भी वी आर लकी के सोनी, मेरी सोनी, सोनी अभी भी लोग बजाते हैं। एंड ही इज़ अ वेरी वेरी ईजी को स्टार टू वर्क विद। और मैं सनी का ये कहूँगी, आई डोंट नो इफ़ यू नो दैट, इंट्रोडक्शन टू गुड म्यूज़िक सनी ने मुझे दिया है बहुत साल पहले। ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, इंग्लिश म्यूज़िक एंड ऑल इंटरनेशनल म्यूज़िक। तब इतनी आसानी से यहाँ नहीं मिलता था इंडिया में, तो हिज कलेक्शन हम लोग सब चुराया करते थे एंड वी से सनी इसका टेप बना के दो। उस टाइम तो टेप्स होते थे, वी यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दैट and we've actually grown together in the industry and otherwise. We were also young, so dheere dheere, and now with God's blessing our children are coming in a film together. Yes. And please give them all your blessings and love like you gave us. Thank you. दिल से बोलता हूँ, कभी कभी कोई गलत बातें भी बोल देता हूँ, लेकिन बोल देता हूँ। और अभी बच्चे लोगों को बताया जा रहा था कि ऐसे बात करनी है, वैसे बात करनी है, तो मेरा बेटा घबराया हुआ था, पापा वो ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। मैंने, बेटा तू, तेरे दिल में जो आएगा तू बोल देना, और बाकी तो वही बात बोलेगा जो सही बात है।
और मेरी आप लोग सबसे बस यही विनती है कि दोनों बच्चे आएंगे जब बात करेंगे ज़रा ऐसी चीज़ें मत पूछ लेना जहाँ पर वो बेचारे सोचते रहेंगे कि इसका जवाब क्या देना है। एक्चुअली सनी मैं वही बोल रही थी, हमारे टाइम में हमको ये सब नहीं करना पड़ता था. लाइफ हैज़ चेंज सो ड्रास्टिकली विद प्रमोशन, सोशल मीडिया, ऑल ऑफ दैट. तो it's a very daunting thing for newcomers to face so many of you with your cameras and questions. So be kind and gentle to them. And I'm sure they will learn. In fact, मैं आज किसी को बोल रही थी कि मैं जब अपनी पहली फिल्म देखती हूँ कि मैंने जब काम किया था त्रिशूल में, I was so gawky, so awkward and so shy. और इन दोनों को मैंने जब फिल्म में देखा है, you don't feel at all they are newcomers. They have done such amazing work, so much confidence. And of course, the credit goes to Avnish also. He's brought out wonderful work from them. Wow. And the whole film has been made with so much love and care. And Surajji, thank you for looking after our bachas so well. सबसे पहले जो थॉट आ रहा है मुझे ये आ रहा है कि आज माय सन इज़ हियर एज ए डायरेक्टर. यस. तो मुझे ये हमेशा लगा कि ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा. कभी मेरे को ध्यान नहीं आया कि सनी जी ही वुड वन डे ही केम एंड ही से ही वांट्स टू बी अ डायरेक्टर. तो फिर मैं चुप रहा. बट फिर मैंने दो ही चीज़ें कही नितिन, जो मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि इफ़ यू हैव टू बी अ डायरेक्टर यू नीड टू वांट टू से समथिंग, तभी डायरेक्टर बनो. सो आई एम सो हैप्पी दिस इज़ अ फिल्म जहाँ ही हैज़ had to wanted to say something and he has had his own voice. Right. So Komalji, that is what I would like to say today. Abhi, sir, this is only I can only have gratitude because हमें सिर्फ बोला गया कि फिल्म्स जो है वो हमारा धर्म है, कर्म है, जो मेरे ताऊ जी हमेशा बोलते हैं. तो वही चीज़ जब आप देखते हैं कि पहले राष्ट्रीय की फिल्मों को जो प्यार मिलता है, आज भी मैं जब जाता हूँ तो लोग मुझे हम आपके कौन के नाम से जानते हैं. मतलब इट इज़ अनबिलीवेबल when you get so much of love, so much of respect. It is only because we have stuck to our values. Yes. And like Sunny ji, Poonam ji said, just being simple, just making what we want to make. So this much I can say. जब ये concept अवनीश ने दोनों का सुनाया तो सब्जेक्ट मैंने बोला जो तुम्हें बनाना बनाओ, बस ये देखना कि राष्ट्रीय की ऑडियंस भी आएगी, बस वो उतना ध्यान कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड एंड मेक योर फिल्म. फिर सनी जी का फ़ोन आया मेरे पास कि सुना है कि बेटे की पिक्चर बना रहे हो. तो राजवीर, आई डोंट नो वेदर यू नो राजवीर अबाउट दिस. सो आई सेड कि हाँ. फर्स्ट थिंग आई सेड बट सनी जी उसमें एक्शन नहीं है. मैं घबरा गया. मैंने वापस फ़ोन किया तो फर्स्ट थिंग इज नो, आई वॉन्ट अ सब्जेक्ट which my son will love, which he should like, and it should be something from the heart. Right. Then I remember पूनम जी का मैसेज आया to my sister अनुराधा. तो अनुराधा जी ने कहा कि ऐसे पूनम जी ने कहा पलोमा के बारे में. सो पलोमा फर्स्ट फोटोज केम ऑफ यू विद अ गन. हाँ, एक फ़ोटो थी पूनम जी गन वाली आई कोई. तो फिर बट बोथ मी एंड अवनीश सॉ एंड वी सेड दिस इज़ मेघना. सो ऐसे ही तब भी ऐसी फिल्में बनी है, अब भी ऐसी फिल्में बनी है, कोई चलती है कोई नहीं चलती है, बट जर्नी हम लोगों ने तब भी एंजॉय की और आज भी बहुत इन बच्चों को देख के वी आर एंजॉइंग. बहुत मेहनत की तीनों बच्चों, मेरे लिए तो तीनों का लॉन्च है आज और इतने सारे और आई कैन ओनली विश. बट 35 years आई ऑल्सो वॉज अ न्यू कमर. आई ऑल्सो हैड हीरो हीरोइन लाइक दिस एज नर्वस. वो भी एक जोश में बनी, ये भी एक जोश में बनी. उसकी भी पहले दिन बारिश ही बारिश थी, हमारी फिल्म में भी बारिश ही बारिश हुई. बस आई कैन ओनली से दैट ऑल आवर ब्लेसिंग्स. वी आर नर्वस पेरेंट्स टुडे. राष्ट्रीय प्रोडक्शन में तो जानते ही हैं, हमेशा इन लोगों ने, जैसे डिज्नी फिल्म्स हैं, वो हमेशा एक तरह की फिल्म बनाते हैं जो फैमिलीज़ के लिए होती हैं. एंड दैट्स व्हाट दे हैव ऑलवेज बीन डूइंग एवर सिंस. कभी बहके नहीं. और ये फिल्म भी उसी तरह से है. आप लोग बोलेंगे इन्होंने फिर से शादी के ऊपर है या उस तरह की है, बिकॉज हमेशा दे ब्रॉट दोज ऑल द फैमिली में वैल्यूज़ क्या होती हैं, शादी कैसे होती है, कैसे लोग पूरे परिवार दूर दूर से आके इकट्ठा होता है और किस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं, क्या क्या नहीं होता, जहाँ इमोशंस और बच्चे जो दूसरे परिवार ये परिवार से मिलते हैं और पूरे घुल-मिल से जाते हैं और सब तरह की फेस्टिवल्स होती हैं. ये फिल्म भी बेस्ड वहीं है, लेकिन ये फिल्म आज की है, आज की जनरेशन की है, क्योंकि मैंने देखी है.
और मैं बस यही कह सकता हूँ, मेरी एक फ़िल्म थी मैंने जो बनाई थी, सोचा ना था, शायद आप लोगों को अच्छी लगी होगी उस वक्त. I remember I'd shown them all the journalists that time because I was so proud of that film. And I think this film is nothing less than that or maybe more. क्योंकि इस फिल्म में हमारे डायरेक्टर साहब ने जो किया है बहुत बढ़िया किया है. बिकॉज ओवर हियर ही इज़ ब्रॉट आउट द आज की जनरेशन वेडिंग को किस तरह से देखती है और रिलेशंस क्या होते हैं. जैसे लिव इन रिलेशंस होते हैं, पेरेंट्स का होता है, जॉइंट मीन्स वेडिंग्स करवाते हैं, अरेंज मैरिजेस होती हैं. ये सब चीज़ों को पकड़ के उसने जिस तरह से सब कैरेक्टर्स जितने भी इस फिल्म में हैं सबको जिस तरह से उसने इकट्ठा किया है और सबकी अपनी अपनी एक दर्द है या कहानी है, उनका विश्वास है कि मैं ऐसे रहना चाहता हूँ, ये वो पूरा इस फिल्म में आता है. तो आई एम वेरी श्योर दिस इज़ वेरी डीप रूटेड today's youngsters film, and I can vouch for that because I've seen it. So that's what I would like to say. It's honestly incredible. I don't think that any of us thought this would happen. You just dream of making, for me personally, you dream of making a film. एक picture बनानी है, बस मन से बनानी है. And to get this kind of a stage to show it to the world, what more could we have asked for? Just very, very grateful, so happy, and to have such stalwarts at the trailer launch. Of course, families, also from the media. I mean, we've all grown up watching and reading. Couldn't have asked for anything more. Saas Bahu ji to is such a legend. It was an honor at Raj Street too. I mean, मैं पैदा नहीं था उस वक्त, but it was. I mean, his songs are still celebrated today. Ma'am, regarding love, love is a very complicated thing. उस वक्त भी complicated ही था. इसलिए I think it connected with everyone. In their own way. मैंने प्यार की देखता हूँ, बेताब देखता हूँ. So I still connect with those emotions even today, even though, like I said, I was not born at that time. So love has, I think, transcended time, has transcended all boundaries. And ma'am, Dono is also a love story. It also talks about the complications of love. आज ये ज़माना आ गया है that today we as individuals have the ability to make decisions which maybe us, our earlier generations were not able to. बट बहुत बार ना हमारे खुद के जो अंदर के ये डीमंस होते हैं, दे स्टार्ट टू टॉक, दे स्टार्ट टू एक्ट एज रोड ब्लॉक्स रादर देन पहले जो होता था मुगल आज़म के टाइम से. सो मैम, दिस फिल्म इज़ अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस दैट लव कैन गिव एंड ऑल्सो द स्ट्रेंथ्स दैट लव कैन गिव. एंड वीव जस्ट ट्राई टू गो अबाउट इट एंड टेल अ स्टोरी अबाउट लव इन डिफरेंट वेज. जैसे हमारे ट्रेलर में दिखाया गया है, लव happens multiple times in life sometimes, and sometimes you need closure, sometimes you have to move on. And this is the story of two people. इन दोनों की अलग अलग प्रेम कहानियाँ हैं, किस तरह ये दोनों कहानियाँ आके जुड़ जाती हैं. That's what Dono is about. I think all of us find closure in our own time and space. It just hits you randomly, and it gradually, you learn from it. And I mean, every second, no matter how old you are, there's a closure that you chase for something that you feel complete for. And this movie really, really talks about that. And it shows the character's journey that I portray in the movie that I'm so blessed to be. So yeah, closure is something, you can't really describe it. It's a feeling. And once it hits you, you feel like you found the final piece to the puzzle. And you can see the whole picture and you go like, what an idiot. I was such an idiot. Pretty much it. Closure is such an important concept. I don't think it gets talked about enough. That's why when we were working on this subject, we thought that it could be something that could be a special story, and we could really do justice to this aspect of it. It's an important thing which doesn't get talked about a lot. I hope after this film, someone might pick up something from here, and it might help someone. To be very honest, like my father said earlier, यही बोला था कि make a film that's you. What you think about love, what you think about relationships, and what you think about family. Rajshri has always made films. This I've heard from my seniors. Rajshri has always made films which my great grandfather had said कि a film that I can see with my in-laws, with my elders. And I honestly believe कि आज जो मैं film अपने in-laws या अपने family के साथ देख सकता हूँ, I feel it's more progressive today. And I can see and talk about things that maybe my grandfather, my great grandfather couldn't discuss with his relatives. And that's honestly what this film is. It's a Rajshri film. I come from the Rajshri family. I don't think I can take that away from how I view the world.
So to answer the question, it is today's story, but like I said, love transcends. It's been the same throughout. So there's some person who's pining for someone who needs closure. ये बरसों से हम देख ही रहे हैं. That's honestly. I wanted to talk about Avnish, since you had asked him that question. He's so open-minded, honestly, I felt. Even though he's been so thorough with his work, he was so prepared in every category, whether it was his sound or whether it was editing or whether it was on floors. But he was still so open-minded in general to take in any kind of creative collaboration. And it was so much fun working with him. So thank you for trusting me with Meghna, honestly, and giving me that chance. Honestly, when I first heard the script, it was very fresh. It was extremely fresh. And Avnish was writing the script for about 4 years. So anything I would ask, he already had a counter to, because he must have thought about it like year 1 or year 2. So I felt stupid butting it. I'm like, this guy has done all his homework. And I had full faith and trust in him. I think it's natural. Comparisons are inevitable, definitely, when you're from such lineage. I think as newcomers, and we're all newcomers here, we can only hope that people like our work, and I hope that we get the same love that our parents have gotten and his family have gotten for years. I mean, eventually we will probably have to create our own identity, and I hope that happens. I mean, yeah, first perception is that I'll be beating up people and screaming. But when I heard the script, this was a character that I felt like was a character and not a hero. I felt like he was an individual I could really sink my teeth into, and I thought I could really, my skeleton was perfect to fit in his skin. So it was without a doubt. I don't really plan things, what movies I want to do. If I hear a script or a character I really like, and I was so lucky that I got to hear this, and I'm just really blessed and lucky that this script came to me. As a kid, I was मेरे grandfather रहे नहीं अभी Raj Babu, but he was my favorite human being. He was film producer. A lot of people might remember him. I would spend all my time with him. तो उनके साथ रह कर थोड़ा ये भी, and he used to take us everywhere. My grandmother passed away when we were very young. We became his life, my brother and I, all three of us. And he would take us everywhere. तो ये हो गया बाबा जी की तरह film producer बनेंगे. So then my father said, ठीक है चलो, then you want to be a film producer, बाबू जी हैं, दादा जी हैं यहाँ पे, तो CA करो, अच्छा ही है. But I don't know, as you grow older, you start to appreciate cinema as more than commerce. You start to appreciate cinema for the intricacies of story. कि एक scene के बाद ये scene क्यों आया, इस dialogue के बाद ये dialogue क्यों आया, इस moment के बाद ये moment क्यों आया. And I just started falling in love with that, as I was growing older. So when I went to my father, finally he said, अरे भाई ये कहाँ से आ गया यार. But no, so that's where it actually changed for me. You start to appreciate cinema as an art rather than business. And that's honestly what inspired me so much. बहुत खुश थे. They told me, Rajveer, just be yourself. You're blessed with a good personality, and so they said, just be yourself. Don't try putting on a front. Don't look at your dad's image or try to be him, or your grandfather's or your chachas. Just because you were raised well, and just be yourself and natural. Growing up in a film background and everyone acting, and you thought this is how you got the bread home. You thought that this is normal. Everyone does this. When you grow up, you realize, this is weird. This is very unique. So I was always influenced by movies. I always loved acting. I used to get a really good joy. I feel like you could really disguise yourself with a character because it's hard to be yourself. The advice they've given me is just work hard, work on your craft, because don't try to be a star, try be an actor first. Your characters will make you a star. So that's what I do from here, put my eyes down and I just work on my craft. I think I'm very lucky because my parents have been damn supportive of anything that I do ever since I was a kid. Whatever hobbies I had, they would always encourage me to take some class, or even if it's painting, for example, during lockdown, mom would buy me paints and canvases to encourage my hobbies and all of that. So when I did decide to tell them that I'm very serious about this profession, I don't think they expected it, but
obviously they expressed how difficult this line is and how much goes into, you know, into this craft and profession. But I think, I hope I'm making them proud right now, and they've been they well, like, I don't know how to explain. I get really emotional talking about how close we are. I'm sorry. हेलो हेलो पलोमा जी, आरती सक्सेना। मेरा सवाल आपसे है कि पहले प्यार और ब्यूटी को भोलापन से, मतलब जैसे प्यार है तो उसको इनोसेंसी में माना जाता था और ब्यूटी को भी इनोसेंसी में माना जाता था। आज के टाइम में प्यार को रिलेशनशिप और इंटेलिजेंसी भी माना जाता है। तो आप मतलब जो अब हीरोइन बन के आ रही हैं, तो आप अपनी मम्मी से कितनी डिफरेंट है? आपकी मम्मी ब्यूटीफुल भोली भाली थी, तो आप उनसे कितनी डिफरेंट हैं? You know, that's so true about mom. Actually, in every film I have been in awe of her presence and her performances. She just charms up the screen, honestly, with her purity and positiveness, I think. What was the last part of the question? Sorry. ब्यूटीफुल और भोली भाली थी, हाँ जी। तो आप कैसे अपने आप को मतलब पेश करेंगे फिल्मों में? I think, I hope कि मेरा काम speaks for itself, honestly, and I hope कि मेरा खुद का identity eventually आ जाएगा. I can only hope for that. बाकी आरती जी बंदूक वाली फोटो तो गई थी, सर ने बताया, पता ही है आपको जी। और राजवीर जी से सवाल है कि मतलब सनी जी ने जब शुरू किया था तो लव स्टोरी से शुरू किया, लेकिन उनकी जो इमेज थी वो एक्शन वाली थी। कुछ कुछ आप भी वैसे ही लग रहे हैं, तो मतलब आपका भोला भाला ही चेहरा है, लेकिन एक्शन है और लव कर रहे हैं, तो ये मतलब कैसे आगे बढ़ेगी गाड़ी? I guess I'll be yelling soon. Watching Dad, unke sare movies growing up, honestly, I just always wanted to beat evil and free the innocence from evil people. I actually wanted to join the army also after watching Dad's movie, because he used to just get me so charged up. I guess it's just in my bones and blood, and I couldn't escape it even if I tried a romantic movie, I guess. It's just there. और डांस भी आप सनी जी जितना ही करते हैं? अच्छा। I worked hard on the dance and I was very carefree, and I hope I become number 2 in the family. Avnish, yeah, on your left, yes, yeah. Avnish, Nitin introduced as Avnish Suraj Barjatia. Does the enormity hit you that Suraj Barjatia's son is making his debut as a director after 35 years? Does the enormity of Suraj Barjatia's son hit you? Honestly, very honestly, I don't think there's any pressure. But what it is, it's a responsibility. I think, you know, it's very important that that we made a film which lives up to the name and the legacy of not just my father, but also Sunny sir, Poonam ji, the Rajshri, and the Rajshri brand. That responsibility was always there in the back of our head. You know, we can't take this opportunity lightly. We have to make a good film. We have to make a film that we can be proud of, that they can all be proud of. Hi, Rajveer. Over here, straight, towards your left. Hi. Standing over here. Rajveer, when Sunny ji had debuted, you know, everybody expected him to continue the legacy of what Dharamji had built, which was the action, macho man, he-man avatar, and he did it splendidly. But those days, the audience kind of expected that. Do you think so now for the audience to wholeheartedly embrace a star kid, it's more important for you all to carve your own niche rather than continue that same legacy? Then you all get better acceptance? I agree with that. I think it's important to have your own individual stamp on this industry. Otherwise, they just expect you to follow your dad's traits, your grandfather's traits. So yeah, that's why I really like the subject when Avnish narrated it to me, because it was so different to what people would expect me to choose. They would choose to beat 100 people up, scream and have a big body and everything. But unfortunately, I was in love with the craft. I just loved acting. So I noticed if I get typecasted in that, it's not a good idea for my first movie.
So I think it's very important to have your own individual stamp in this industry. या हेलो हाय शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन जिस तरह से राजवीर आपके लिए एक सवाल है जिस तरह से अवनीश जी के बारे में सूरज जी ने कहा कि वो कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंट शायद बनना चाहते थे तो राजवीर इसके आपका किस तरह से रहा इसके बारे में अगर बात करें कि एक्टर ही बनना था या फिर कुछ और आपको कहीं जाना था अगर बात करें Honestly, my parents hated the fact of becoming an actor. They always wished that I should have studied or done something else in this life because this line is so unpredictable. You're happy for 1 second, you're miserable, you're not getting work. I mean, Dad got a hit after 22 years. So they were worried how it's such a mentally draining line. And unfortunately, I just fell in love with acting. I just couldn't get enough of it. So yeah, even now they wish if I did something else and not this. राजवीर on your left. Hi. राजवीर आपका फेवरेट हीरो कौन है जिनसे आप बहुत इंस्पायर्ड होते हैं जिनकी फिल्में आप बहुत देखते हैं Growing up तो पापा थे and even now I mean no one can do what he does. There are a lot of actors that also inspired me from Hollywood, from India. I mean, I suck at lists because I just always draw a blank. Like today, this person inspired me. Last week, it was someone else. I just suck at making lists. So कभी ऐसा कोई दिन आ गया आपके पापा की गदर 3 और आप दोनों की कोई फिल्में साथ में आ गई सिनेमा में तो वो कैसे प्रेशर हैंडल करेंगे If there's a good script, then I won't have no pressure. It'll be awesome. You'll see me yelling as well. Okay, great. पलोमा जी आपका फेवरेट हीरो मेल फीमेल जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड जिनकी आप बहुत फिल्में देखती हैं ऑन योर लेफ्ट हाय जिससे I get inspired, you said? Yes. I think I liked what Rajveer said a lot, yeah, that your inspiration keeps changing all the time. You know, you can be inspired by everybody in some way. Thank you. All right, we'll take 2 more questions. Hi, Rajveer. Hi. Here. So the trailer is beautiful, and so as we saw in the trailer, it says that it talks about a special destination. So I would like to ask all 3 of you that what is a special destination for you guys? My nanny's house. Can't get enough of it. Rajveer, either side. Rajveer, you've been thrown out to the world now. How would you take the challenges and make it into opportunities? I think it's important to work on yourself non-stop. You're always learning something. And you can't avoid mistakes because we never made any. So you'll never know what a mistake is till you make one. And for opportunities, I think your work speaks for yourself. If I'm good and consistent in my work, opportunities will be created. That's all secondary, I think. I think you should really work on your craft. Because right now I may look good, but if I'm 60 and 70 and I'm old, I got to better be a good actor because looks just don't carry you. It's your craft. So yeah, that's what I would say. I would say work creates opportunity. Your work will create opportunity if you're good. Avnish, Rashi is always known, on your left, yeah. Rashi is always known for his music actually, you know. तो आपके ऊपर पे कितना प्रेशर था कि एक स्टोरी तो अच्छी कहनी है उसके साथ साथ म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देना है और शंकर एहसान लॉय लाइक यू नो मतलब आपने उनको क्यों चुना एक्चुअली व्हाट वाज इट लाइक यू नो फर्स्ट टाइम था जी नहीं बिल्कुल दिस वाज ऑलवेज सपोज्ड टू बी अ लवली म्यूजिकल फिल्म हमारे 8 गाने हैं इस फिल्म में एंड इट वाज वंडरफुल टू वर्क विद शंकर एहसान लॉय एहसान सर इज हियर एंड इरशाद कामिल जी I was very, very blessed to work with them, and they've given us an outstanding album. Its title song is already becoming popular. Arman is here. He sung it so well for us, and I really hope that everyone loves the album and appreciates it. Well, अभी पाडुकोन साहब भी म्यूजिक की बात कर रहे थे यहाँ पे, so मैं गुजारिश करूँगा. Arman is here, so why not? Let's have him up on stage, ladies and gentlemen. Dono, the title track, इतना सारा प्यार, organically it has grown and become massive. So Arman, congratulations.
And thank you for the lovely track one more time. Yes. So क्योंकि मैंने कहा ना एक और सरप्राइज थोड़ा सा रिवर्ब दे देना मुझे अरमान, before we Singing के वक्त हाँ, before we ask you about the song, जो कि जैसा मैंने कहा massive हो गया है, you have to tell us about these two wonderful people here because I believe you all are childhood buddies. I have to, मैंने ये कभी शेयर नहीं किया है, लेकिन राजवीर और पलोमा मेरे चाइल्डहुड दोस्त हैं. हम तीनों ने, दोनों नाम मूवी का है, लेकिन हम तीनों ने we've seen life together, we've grown up together, and I think इसे cosmic conspiracy कह सकते हैं that we all here together on the same stage and I've sung the title song of that debut movie. I couldn't be prouder. मुझे बहुत खुशी हो रही है and I can't wait for all of you guys to watch the movie, love the album and give them all your love. And अभी देखो हमने बड़ी अच्छी बातें कर ली है ना, बहुत स्वीट बातें कर ली. Now give us some goss यार, थोड़ा सा बताओ कि मतलब आधे लाइक इतना ही शांत या वो. अरे हम लोग बहुत इनोसेंट लोग यार, कोई गॉस वॉस नहीं है हम लोग के बीच में. आप लोग क्रिएट मत कर देना बस, वो एक हमने क्या डिसाइड किया था बाहर, आप हमको मसाला देने वाले हो, आपने पलटी मार दी. नहीं, मेरा मसाला सिर्फ अच्छा गाना गाना होता है बस, दैट इज ऑल. तो हो जाए दोनों का टाइटल ट्रैक फॉर ऑल ऑफ अस. Yeah, I would love to sing that for all of you guys. Oh, we can make some noise for Arman Malik, ladies and gentlemen. Yes. Sorry, lyrics याद नहीं तो I'm just gonna look at it. है कोई ख्वाब या खुशी जो साथ है अब मेरे, बोलूं ये कैसे. तेरा ही था तेरा ही है जो पास है सब मेरे, बोलूं ये कैसे. बातें होठों पे ठहर सी गई, बातें राहों में बिखर सी गई. तू दिल की बात जान ले, ये बोल दे तुम मेरे, बोलूं ये कैसे. तेरा ही था तेरा ही है जो पास है सब मेरे, बोलूं ये कैसे. मेरी खामोशी को जान ले, काम तेरे बिन मेरा ना चले. हो तुम और मैं दोनों और सफर. तुम और मैं दोनों राहें तन्हा सी, दिल है बहका सा, लेके आई है सुबह जैसे इश्क की हवा. मैंने ऐसे ही जीना है मतलब के तुम हो मेरी. Lots of love to you, sir, and lots of love to Irshad Kamil, sir, as well, for giving such a beautiful album. I think music and movies go hand in hand, and I'm so glad that I could be a part of this beautiful album. And thank you, Avnish, for trusting me for this movie, because it's always tricky casting a voice for debutants, and I'm glad I could suit Rajveer on screen.